Assalamualaikum to all my dear students. I am Fasila Parekh from AI Mullah High School, Umarwara. ચેપ્ટર 17 કશ્મીર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પદ્ય છે કશ્મીર, જેના કવિ છે वीरेंद्र मिश्रा. वीरेंद्र मिश्रा का जन्म 1933 में हुआ और निधन 1999 में हुआ. वीरेंद्र मिश्र जी का जन्म मड़ीन यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था. ये आकाशवाणी के मानद प्रोड्यूसर रहे थे. ये नवगीत विद्या के गीतकार थे और फिल्म के लिए भी गीत लिखते थे. इनके मुख्य काव्य संग्रह हैं गीतम, अविराम, अचल, मधुवंती, लेखनी, बेला, जुलसा है, छाया, नत धूप में, काले मेघा पानी दे तथा शांति गंधर्व. इन्हें देव पुरस्कार एवं निराला पुरस्कार प्राप्त हुए हैं. विद्यार्थी मित्रों, आपणी 17મી कविता कश्मीर, जेना कविનું नाम છે वीरेंद्र मिश्रा, જેમનો જન્મ 1933 અને મૃત્યુ 1999માં થયો. વીરેન્દ્ર મિશ્રાજીનો જન્મ મધ્યપ્રદેશમાં થયો હતો. તેઓ આકાશવાણીને પ્રોડ્યુસર રહી ચૂક્યા હતા, તેમજ તેઓ ગીતકાર તરીકે ઓળખાતા હતા અને તેઓએ ફિલ્મમાં પણ ગીત લખ્યા છે. તેમનો મુખ્ય કાવ્ય સંગ્રહ છે ગીતમ, અવિરામ, અચલ વગેરે જેવા તેમના મુખ્ય કાવ્ય સંગ્રહ છે. તેમને દેવ પુરસ્કાર તેમજ નિરાલા પુરસ્કાર પણ પ્રાપ્ત થયા છે. આપણી આ કવિતા कश्मीરમાં कश्मीर काव्य में कश्मीर के सौंदर्य एवं संस्कृति का परिचय कराया है. कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है. कश्मीर के प्राकृतिक दृश्य और वहाँ की जलवायु पर्यटकों को बार बार अपनी ओर आकर्षित करती है. इस कविता में कश्मीर के सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया है. विद्यार्थी मित्रों, आप लोगों ने सुना होगा कि कश्मीर बहुत खूबसूरत जगह है. लोग कहते हैं कि कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है. वहाँ पर प्राकृतिक दृश्य और जलवायु पर्यटकों को बार बार अपनी ओर आकर्षित करता रहता है. तो हम यहाँ इस कविता में कश्मीर का सौंदर्य देखेंगे. कश्मीर का जो सौंदर्य इस कविता में वर्णन किया है वह देखेंगे. चलो हम कविता की शुरुआत करते हैं. जहाँ बर्फ़ की राजकुमारी खोई है, स्वर लहरी में, चलो चले फूलों की घाटी में, नावों की नगरी में. जो विद्यार्थी मित्रों, पहली पंक्ति શું છે? जहाँ बर्फ़ की राजकुमारी खोई है, स्वर लहरी में, चलो चले फूलों की घाटी में, नावों की नगरी में. स्वर लहरी यानी ऊंचे नीचे स्वरों की लहर, घाटी दो नदियों या दो पर्वतों के बीच का भाग, नावों की नगरी जहाँ सरोवरों में नावें नहीं नावें दिखाई देती है. जो આ પંક્તિમાં કવિ શું કહે છે તે જોઈએ આપણે. जहाँ बर्फ़ की राजकुमारी खोई है, स्वर लहरी में, चलो चले फूलों की घाटी में, नावों की नगरी में. कवि कहते हैं कि आओ हम वहाँ चले जहाँ फूलों से भरी हुई घाटियाँ है. क्या है? जहाँ फूलों से भरी हुई घाटियाँ हैं और जिसे नावों की नगरी कहा जाता है.
यह ऐसा प्रदेश है जो बर्फ से ढका रहता है। જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પહેલી પંક્તિમાં કવિ શું કહે છે? કવિ કહે છે કે આવો આપણે ત્યાં જઈએ જ્યાં ફૂલોથી ભરપૂર ખીણો છે અને જેની નૌકાઓની નાવોની નગરી કહેવામાં આવે છે. આ એવો જ પ્રદેશ છે જે બરફથી ઢંકાયેલો રહે છે. બીજી પંક્તિ જોઈએ. सनन 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 गाता फिरता गीत पवन, उड़ते हैं पंछी सैलानी, खिलता शालीमार चलन चमन, भ्रमण बजाते सहनाई, किरणों की मालिन आई, झील किनारे वह डालिया भर धूप बिखरे बजरी में. पवन, बहती हवा, पंछी पक्षी, सैलानी सैर सपाटे पर आए हुए यात्री, चमन बाग बगीचा, भ्रमण भंवड़ा, किरणों किरण, झील सरोवर, डालिया बांस की छोटी टोकरी, बिखरना छितराना, इधर उधर फैलाना, बजड़ी कंकड़ी. देखो विद्यार्थी मित्र, दूसरी पंक्ति में कवि क्या कहते हैं? सन 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 सनन सनन गाता फिरता गीत पवन. जो वहाँ सन 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 करती हुई हवा चलती है, ऐसा लगता है मानो गाने का स्वर उभर कर आ रहा है. उड़ते हैं पंछी सैलानी, खिलता शालीमार चमन. क्या कहते हैं? सैर सपाटे पर आए हुए लोगों से उड़ते हुए पंछियों की तरह शालीमार बाग खिल जाता है. भ्रमण बजाते सहनाई, किरणों की मालिन आई, झील किनारे वह डालिया पर धूप बिखेरे बजरी में. चारों ओर भंवड़ों की गुनगुनाहट, भ्रमण बजाते सहनाई એટલે કે चारों ओर भंवड़ों की गुनगुनाहट सहनाई से निकले हुए मधुर स्वर की तरह लगते हैं. यहाँ सुबह का दृश्य सुहाना लगता है. भौर में सूर्य की किरणें किसी मालिन की तरह लगती है. लगता है कि यह किरणें मालिन बनकर आई है. झील किनारे वह डालिया भर धूप बिखेरे बजरी में. और वे झील, वो सरोवर के किनारे अपनी डलिया से धूप निकाल निकाल कर बजरी पर बिखेर रही हो. જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પંક્તિમાં કવિ શું કહે છે? તો કે ત્યાં સનન સનન સન ગાતા ફિરતા ગીત પવન, એટલે કે ત્યાં સન 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 કરતી હવા વહે છે. એનાથી તેમ લાગે છે કે જાણે ગીતના સ્વર સંભળાઈ રહ્યા છે. ઉડતે હૈ પંછી સૈલાની, ખીલતા શાલીમાર ચમન, એટલે કે હળવા ફળવા આવેલા લોકોને જોઈને એમ લાગે છે કે ઉડતા પક્ષીઓની જેમ શાલીમાર બાગ ખીલી ઉઠ્યો છે. भ्रमण बजाते सहनाई, किरणों की मालिन आई, चारों तरफ भमराओना गुंजराव, शरणाईमांथी निकळेला मधुर स्वर जेवा लागे छे. अहींया सवारनुं दृश्य खूब सुंदर लागे छे. सवारमां सूर्यना किरणों कोई मालणना जेवा लागे छे. आ किरणों मालड़ बनीने आव्या होय
એવા લાગે છે। झील किनारे वह डालिया भर धूप बिखेरे बजरी में, એટલે કે સરોવરના કિનારે પોતાની છાબડીમાંથી તડકો સૂર્યપ્રકાશ કાઢી કાઢીને કાંકડીઓ ઉપર વેરી રહ્યો છે। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પંક્તિને હું ફરી બોલી જાઉં છું। ત્યાં સન 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 કરતી હવા વહે છે, એનાથી એમ લાગે છે કે જાણે ગીતના સ્વર સંભળાઈ રહ્યા છે। હળવા ફળવા આવેલા લોકોને જોઈને એમ લાગે છે કે ઉડતા પક્ષીઓની જેમ શાલીમાર બાગ ખીલી ઉઠ્યો છે। ચારો તરફ ભમરાઓના ગુંજરાવથી શરણાઈમાંથી નીકળેલા મધુર સ્વર જેવા લાગે છે। અહીં સવારનું દ્રશ્ય ખૂબ સુંદર લાગે છે। સવારમાં સૂર્યના કિરણો કોઈ માલણના જેવા લાગે છે। આ કિરણો માલણ બનીને આવ્યા હોય એવા લાગે છે અને સરોવરને કિનારે પોતાની છાબડીમાંથી તડકો પ્રકાશ કાઢી કાઢીને કાંકડીઓ ઉપર વેરી રહ્યા છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે ત્રીજી પંક્તિ જોઈએ। ત્રીજી પંક્તિમાં શું છે? જંગલ જંગલ હોદ લગી है, तितली और टीटीहड़ी है, कभी हवा आ जाती है, नई गलत गा जाती है, तब मखमली गलीचों पर कुछ मस्ती सी छा जाती है। मौसम कभी बदलता है, सपना कभी मचलता है, चरवाहे की वंशी छिड़ती नील गगन की छतरी में। जो શું કહે છે? હોદ। હોદ यानी लाग, डांट, प्रतिस्पर्धा। मखमली गलीचे, दूर तक फैले हुए घास के मैदान। मचलता, हथकड़ना, अड़ना, छेलना। गगन, आकाश। विद्यार्थी मित्रों, यह पंक्ति में कवि क्या कहते हैं? जंगल जंगल होड़ लगी है, तितली और टीटीहड़ी है। यहाँ जंगलों में तितलियों और टीटीहड़ियों में होड़ लगी हुई है, यानी कि स्पर्धा हो रही है। कभी हवा आ जाती है, नई गज़ल गा जाती है। जब हवा बहती है तो जंगलों में गज़ल के स्वर सुनाई देते से लगते हैं। तब मखमली गलीचों पर कुछ मस्ती सी छा जाती है। ज़मीन पर दूर दूर तक फैली हुई ऐसी लगती है मानो ज़मीन पर हरे रंग के कालीन बिछे हुए हैं, यानी कि मखमली गलीचे। मौसम कभी बदलता है, सपना कभी मचलता है। यहाँ कभी कभी मौसम बदल जाता है और कभी कभी कल्पना में आए हुए दृश्यों में बदलाव आ जाता है, यानी कि सपनों में, कल्पना में जो दृश्य आए हैं उनमें कभी कभी बदलाव आ जाता है। चरवाहे की वंशी छिड़ती नील गगन की छतरी में। कहीं चरवाहे की बंसी के मधुर स्वर वातावरण में भिन्न जाते हैं। जो विद्यार्थी मित्रों, आ पंक्ति में कवि शू कहे छे? जंगल जंगल होद लगी है, तितली और टीटीहड़ी है। अहीं जंगलों में तितली यानी कि पतंगिया अने टीटीहड़ी एटले के टींटोडियो एटले के अहीं जंगलों में पतंगिया अने टीटोडियो वच्चे स्पर्धा जामी छे। कभी हवा आ जाती है, नई गज़ल गा जाती है। જ્યારે હવા વહે છે ત્યારે
જંગલોમાં ગઝલના સ્વર સંભળાતા હોય એવું લાગે છે। तब मखमली गलीचों पर कुछ मस्ती सी छा जाती है। ત્યારે જમીન પર દૂર દૂર સુધી ફેલાયેલા ડૂડવા ઘાસ એવું લાગે છે કે જાણે જમીન પર લીલા રંગના ગાલીચા પાથરેલા હોય। मौसम कभी बदलता है, सपना कभी मचलता है। જુઓ શું કહે છે અહીં કોઈક વાર ઋતુ, મોસમ એટલે કે ઋતુ બદલાઈ જાય છે તો કોઈક વાર કલ્પનામાં આવેલા દ્રશ્ય બદલાઈ જાય છે। સપનામાં આવેલા દ્રશ્ય, કલ્પનામાં ઇમેજિનેશનમાં આવેલા દ્રશ્ય બદલાઈ જાય છે। चरवाहे की वंशी छिड़ती नील गगन की छतरी में। ક્યાંક ચરવાહે એટલે કે ગોવાળો, ક્યાંક ગોવાળોની વાંસળીના મધુર સ્વર વાતાવરણમાં પ્રસરી જાય છે। જુઓ આ પંક્તિનું ફરી એકવાર બોલી જાઉં છું। અહીં જંગલોમાં પતંગિયા અને તિતોડીઓ વચ્ચે સ્પર્ધા જામી છે। જ્યારે હવા વહે છે ત્યારે જંગલોમાંથી ગઝલના સ્વર સંભળાતા હોય એવું લાગે છે। જમીન પર દૂર દૂર સુધી ફેલાયેલું ડૂડવા ઘાસ એવું લાગે છે જાણે જમીન પર લીલા રંગના ગાલીચા પાથરેલા હોય। અહીં કોઈક વાર ઋતુ બદલાઈ જાય છે અને કોઈક વાર કલ્પનામાં આવેલા દ્રશ્ય બદલાઈ જાય છે। ક્યાંક ગોવાળોની વાંસળીના મધુર સ્વર વાતાવરણમાં પ્રસરી જાય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે આગળની પંક્તિ જોઈએ। पलछिन किसी बहाने से गुजरे हुए जमाने से बस्ती करती बात जहाँ से दूर खड़े वीराने से चश्मे जहाँ हिमानी हैं फूल जहाँ रुमानी हैं हिल हिल कर कहते पत्तों से चांद छुपा है बदली में। पलछिन यानी के पल क्षण, वीराने निर्जन, चश्मे पानी के सोटे, हिमानी शीतल, रुमानी मुलायम, बदली बादल। यह पंक्ति में कवि क्या कहते हैं? पलछिन किसी बहाने से गुजरे हुए जमाने से बस्ती करती बात जहाँ है दूर खड़े वीराने से। यहाँ कहीं बस्ती है तो कहीं निर्जन स्थान है। वह एक दूसरे से संपर्क साधते हुए से लगते हैं। चश्मे जहाँ हिमानी हैं, फूल जहाँ रुमानी हैं, हिल हिल कर कहते पत्तों से चांद छुपा है बदली में। चश्मे यानी के पानी, बराबर। तो क्या कहते हैं? यहाँ ठंडे पानी के अनेक स्रोत है। हिमानी यानी के शीतल, ठंडा, ठंडे पानी के अनेक स्रोत है। समूची घाटी सुंदर सुंदर कोमल फूलों से भरी हुई है। फूलों को देखकर लगता है जैसे वे अपने पौधों के पत्तों से बातें कर रहे हैं। हिल हिल कर कहते पत्तों से चांद छुपा है बदली में। એટલે કે अपने पौधों के पत्तों से बातें कर रहे हो कि देखो चांद बदलियों में लुप्त हो गया है। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પંક્તિમાં કવિ શું કહે છે? અહીં पलछिन किसी बहाने से गुजरे हुए जमाने से बस्ती करती बात जहाँ है
દૂર ખડે વીરાને સે, એટલે કે અહીં ક્યાંક વસ્તી છે તો ક્યાંક નિર્જન જગ્યાઓ છે, તેઓ એકબીજા સાથે સંપર્ક સાધતા હોય એમ લાગે છે. અહીં ठंडा पानीना चश्मे जहाँ हिमानी हैं, फूल जहाँ रुमानी हैं, हिल हिल कर कहते पत्तों से चांद छुपा है बदली में. અહીં ઠંડા પાણીના અનેક ઝરણાઓ છે. આખીએ ખીણ સુંદર સુંદર કોમળ ફૂલોથી ભરેલી જણાય છે. ફૂલોને જોઈને એમ લાગે છે કે તેઓ પોતાના છોડના પાંદડા સાથે પર્ણ સાથે વાતો કરી રહ્યા છે. જુઓ, ચંદ્ર વાદળામાં છુપાઈ ગયો છે. ફરી એકવાર બોલી જાઉં છું. અહીં ક્યાંક વસ્તી છે તો ક્યાંક નિર્જન જગ્યાઓ છે, તેઓ એકબીજા સાથે સંપર્ક સાધતા હોય એમ લાગે છે. અહીં ઠંડા પાણીના અનેક ઝરણાઓ છે. આખીએ ખીણ સુંદર સુંદર કોમળ ફૂલોથી ભરેલી જણાય છે. ફૂલોને જોઈને એમ લાગે છે કે તેઓ પોતાના છોડના પર્ણ સાથે વાતો કરી રહ્યા છે. જુઓ, ચંદ્ર વાદળામાં છુપાઈ ગયો છે. આગળની પંક્તિ જોઈએ. जल में खिली रुबाइया बजरों की अंगड़ाइया, चले सिकाड़े संग में चलदी बागों की परछाइया, प्रेम कथाए विलहण की कौन कहे गाथा मन की, जोलम सोई ताड़ों वाले नभ की नील मसहरी में. रुबाइया मीन्स 4 पंक्तियों का छंद. बजरो छायादार बड़ी नावे, सिकाड़े लंबी नाव. विद्यार्थी मित्रों, यह पंक्ति में कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि जल में खिली रुबाइया, बंजरों की अंगड़ाइया, यानी कि झीलों और सरोवरों में जल अठखेलिया करते से लगते हैं. उनके स्वर से रुबाइयों के सुनने का आनंद मिलता है. क्या मिलता है? रुबाइयों का सुनने का आनंद मिलता है. और सरोवरों के जल में तैरते बजरे यानी कि बड़ी नावें हिलती डुलती है तो वे अंगड़ाइया सी लेती नजर आती है. देखो पहली पंक्ति. झीलों में सरोवरों के जल अधखेलिया करते से लगते हैं. उनके स्वर से रुबाइयों के सुनने का आनंद मिलता है. सरोवरों के जल में तैरते बड़ी नावें हिलती डुलती है तो वो अंगड़ाइया सी लेती नजर आती है. चले सिकाड़े संग में चलदी बागों की परछाइयाँ. पानी पर सिकाड़े लंबी नावें चलती है तो पानी में आस पास बगीचों की परछाइयाँ दिखाई देती है. सिकाड़ों के चलने पर ऐसा लगता है जैसे बागों की परछाइयाँ सिकाड़ों के साथ साथ चल रही है. प्रेम कथाए विलहण की कौन कहे गाथा मन की, ज्वेलम सोई ताड़ों वाले नभ की नील मसहरी में. इस भूमि पर जगह जगह विलवण की प्रेम कथाओं के दर्शन होते हैं. ऐसे माहौल में अन्य कहानियों के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता. यहाँ झेलम नदी सितारों से सज्जित
मसहरी में सोई सी लगती है। જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, પાંચમી પંક્તિમાં શું કહેવા માંગે છે? પાંચમી પંક્તિમાં કહે છે કે જલ મેં ખીલી રૂબાઈયા બજડો કી અંગડાઈયા, એટલે કે જળાશયો અને સરોવરોના પાણી કિલ્લોલ કરી રહ્યા હોય, અવાજ કરી રહ્યા હોય એવું લાગે છે. તેમના સ્વરથી ચોપાઈ સાંભળવાનો, એટલે કે ચાળ એનો છંદ સાંભળવાનો આનંદ મળે છે. સરોવરના જળમાં તરતી મોટી નૌકાઓ હાલક ડોલક થતી હોય તેવી આળસ મળતી હોય એવું લાગે છે. ચલે શિકારે સંગ મેં ચલદી બાગો કી પડછાઈયા, પાણી પર લાંબી નૌકાઓ ચાલે છે ત્યારે પાણીની આસપાસ બગીચાઓના પડછાયાઓ દેખાય છે. લાંબી નૌકાઓના ચાલવાથી એવું લાગે છે કે જાણે બગીચાઓના પડછાયા નૌકાઓની સાથે ચાલી રહ્યા છે. પ્રેમ કથાએ વિલવણ કી कौन कहे गाथा मन की, जेलम सोई ताड़ो वाले नभ की नील मसहरी में। આ ભૂમિ પર ઠેર ઠેર અલગ અલગ જગ્યાઓ પર બિલહણની પ્રેમ કથાઓના દર્શન થાય છે. આવા વાતાવરણમાં બીજી વાતો વિશે વિચારવાની તક જ મળતી નથી. અહીં જેલમ નદી તાળલાઓથી સજ્જિત મચ્છરદાનીમાં સૂતેલી હોય, મસહરી એટલે કે મચ્છરદાનીમાં સૂતેલી હોય તેવી લાગે છે. ફરી એકવાર બોલી જાઉં છું. જળાશયો અને સરોવરોના પાણી કિલ્લોલ કરી રહ્યા હોય એવું લાગે છે. તેમના સ્વરથી ચોપાઈ સાંભળવાનો આનંદ મળે છે. સરોવરોના જળમાં તરતી મોટી નૌકાઓ હાલક ડોલક થતી હોય ત્યારે આળસ મળતી હોય એવી લાગે છે. પાણી પર લાંબી નૌકાઓ ચાલે છે ત્યારે પાણીની આસપાસ બગીચાઓના પડછાયા દેખાય છે. લાંબી નૌકાઓના ચાલવાથી એવું લાગે છે કે જાણે બગીચાઓના પડછાયા નૌકાઓથી સાથે ચાલી રહ્યા છે. આ ભૂમિ પર ઠેર ઠેર બિલહણની પ્રેમ કથાઓના દર્શન થાય છે. આવા વાતાવરણમાં બીજી વાતો વિશે વિચારવાની તક જ મળતી નથી. અહીં જેલમ નદી તાળલાઓથી સજ્જિત મચ્છરદાનીમાં સૂતેલી હોય તેવું લાગે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે આગળનો છેલ્લી પંક્તિ જોઈએ. અમરનાથ કી રાહો મેં शेष नाग की बाहों में पश्मीना ध्वज फहर रहा है. देवदारू की छाहों में मन जिसका गंभीर है वह अपना कश्मीर है. दाग लगे ना देखो भारत की बर्फीली पगड़ी में, चलो चले फूलों की घाटी में नावों की नगरी में. पश्मीना यानी कि कश्मीर में बनने वाला बहुत मुलायम ऊनी कपड़ा. देवदारू एक बहुत बड़ा पेड़ जिससे अलकतरा और ताड़पीन का तेल मिलता है. गंभीर जटिल पगड़ी, सिर पर पहनने वाली पगड़ी. विद्यार्थी मित्रों, यह पंक्ति में कवि क्या कहते हैं? अमरनाथ की राहों में, शेष नाग की बाहों में. इस प्रदेश में अमरनाथ जैसी पवित्र गुफा
और शेष नाग जैसा विशाल सरोवर है। पश्मीना ध्वज फहर रहा है देवदारू की छाहों में। पूरा प्रदेश देवदारू के बड़े बड़े वृक्षों से भरा पड़ा है। हमारा तिरंगा झंडा पश्मीना ध्वज यानी कि जो पश्मीना मतलब कि कश्मीर में बनने वाले बहुत मुलायम ऊनी कपड़े से बना हुआ हमारा तिरंगा झंडा शान से फहरा रहा है। मन जिसका गंभीर है वह अपना कश्मीर है। क्या कहते हैं? यह हमारा कश्मीर है। आज हमारे कश्मीर पर दुश्मन की कुटिल निगाहें हैं। दाग लगे न देखो भारत की बर्फीली पगड़ी में। चले चलो फूलों की घाटी में नावों की नगरी में। क्या कहते हैं? आज हमारे कश्मीर पर दुश्मन की खूब कुटिल निगाहें हैं। समस्या जटिल है पर वीर जवानों सतर्क रहो और इस बात का ध्यान रखो कि हमारे कश्मीर पर आँच न आने पाए। हमारे बर्फीले पहाड़ हमारे कश्मीर को आँच न आने पाए। आओ फूलों की घाटी और नावों की नगरी में चले। विद्यार्थी मित्रों, हमारी यह आखिरी पंक्ति में कवि क्या कहते हैं? देखो, अमरनाथ की राहों में शेष नाग की बाहों में। आ प्रदेश में अमरनाथ जेवी पवित्र गुफा અને शेषनाग જેવું विशाल सरोवर છે। पश्मीना ध्वज फहर रहा है देवदारू की छाहों में। એટલે કે સમસ્ત પ્રદેશ દેવદારૂના મોટા મોટા વૃક્ષોથી છવાયેલો છે। આપણે તિરંગો ધ્વજ શાનથી લહેરાઈ રહ્યો છે। આપણો તિરંગો ધ્વજ શાનથી लहराई रह्यो छे। मन जिसका गंभीर है वह अपना कश्मीर है। दाग लगे न देखो भारत की बर्फीली पगड़ी में। શું કહે છે? આજે આપણું આ છે શું છે? આ આપણું કશ્મીર છે। આપણા કશ્મીર પર દુશ્મનની કરડી નજરો મંડાયેલી છે। આપણું કશ્મીર સમસ્યા જટિલ છે। આ કેવી છે? દુશ્મનોની કરડી નજરે મંડાયેલી છે એટલે સમસ્યા જટિલ છે। પરંતુ હે વીર જવાનો, તમે સતર્ક રહો અને આપણા કશ્મીરને ઊની આંચ ન આવે તેની તમે ध्यान રાખો। चले चलो फूलों की घाटी में नावों की नगरी में। आवो फूलोनी खीर અને નૌકાઓની નગરીમાં જઈએ। ફરી એકવાર બોલી જાઉં છું। આ પ્રદેશમાં અમરનાથ જેવી પવિત્ર ગુફા અને શેષનાગ જેવું વિશાળ સરોવર છે। સમસ્ત પ્રદેશ દેવદારૂના મોટા મોટા વૃક્ષોથી છવાયેલો છે। આપણો તિરંગો ધ્વજ શાનથી લહેરાઈ રહ્યો છે। આ આપણું કશ્મીર છે। આજે આપણા કશ્મીર પર દુશ્મનની કરડી નજરો મંડાયેલી છે। સમસ્યા જટિલ છે પરંતુ હે વીર જવાનો, તમે સતર્ક રહો અને આપણા કશ્મીરને ઉપર આંચ ન આવે તેનું ધ્યાન રાખો। આવો ફૂલોની ખીર અને નૌકાઓની નગરીમાં જઈએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણું 17મું કાવ્ય કશ્મીર અહીંયા પૂર્ણ થાય છે। થેન્ક યુ।